आणि फिर बाहर आते थे ऐसा। अगर उसको स्पिन कर रहे हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कपड़ा बराबर धुलता नहीं, सूखता नहीं। कितना धूप है यहाँ पे। ऐसा होता है क्या?
ऐसे टकराते हैं क्या? ऐसे टकराते रहते हैं क्या? ऐसे आवाज आता है। अभी 9 मिनट बाकी है अभी। पूरा हिल जाता है। बंद मतलब फिर से पानी लेता रहेगा ना कि पूरा टोटली बंद हो जाता है? फिर वापस पानी। घूमता भी नहीं है। हाँ? कभी-कभी इतना घूमता भी नहीं है। हाँ। ऐसा राउंड स्टार्टिंग से ऐसा आवाज आकर बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है आपको, जो बोल रहे हो आप प्रॉब्लम? कितना साल हो गया मशीन को? 2 साल हो गया। और प्रॉब्लम आपको 1 महीने से? पहले भी इतने ही कपड़ा डालते थे कि कम डालते थे? नहीं डालते थे, कभी थोड़ा ज़्यादा डालते थे। इससे कम डाले तो भी होता है।
शॉकअप खराब है। इसका शॉकअप खराब है। ये है सैमसंग का सस्पेंशन रोड इन्वर्टर, इसको भी हम चेंज करने जा रहे हैं। है पुराना शॉकअप सर जो हमने अभी चेंज किया है। वाइट पीछे होता है और पिंक आगे होता है। तो स्पिन की टाइम मशीन फिर से रेंज में जाता था, पानी लेता था, तो ये शॉकअप खराब होने की वजह से ऐसा इश्यू आता है। अभी हमने चेंज किया है।
हम अभी चेक कर रहे हैं स्पिन करके इसको। शॉक अब्सर हमने चेंज किया है इसके लिए। एक साइड में हो गया कपड़ा। टाइम लगता है। वॉशिंग मशीन प्रॉब्लम। जब कस्टमर कंप्लेंट है, जब भी स्पिन होता है तो फिर स्पिन के टाइम पानी लेते हैं। तो हमने चेक किया तो उसका सस्पेंशन रॉड पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसकी वजह से जब भी स्पिन होता था तो ड्रम को बैलेंस नहीं कर पाता था। इसकी वजह से फिर से पानी लेना चालू कर देता था। हमने उसका सस्पेंशन रॉड चेंज कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।